Assalamualaikum and good morning students. Uh, Today I am going to present lecture number 3 for the course of Basic Electronics. In today's lecture I am actually going to present you different methods by which we can represent a forward bias diode in a circuit. आसान अल्फाज में डायोड अगर फॉरवर्ड बाइज होता है देन हाउ डू वी represent the diode in a circuit. We will be studying that today. Okay, we will be studying different models, around 2 to 3 models, in which there will be different methods used to represent the diode in the forward biased region. In all of these models that we are going to study today, we will consider that during the reverse biasing the diode is completely off. Although we studied that a practical diode does not fully turns off when it is reverse biased, we already know this, but when we talk about modeling of the diode in the circuit, we keep the diode off in the reverse bias region, trying to keep our calculations simple, unless and until there is some very sensitive instrument. Then we consider the effect of the small negligible leakage current during the reverse biasing. But if we are not doing extremely sensitive calculations, if we are trying to study it just to learn the method, what we do in all of the methods that we are going to study, we consider that the diode will remain off during the reverse bias region, right? Okay, now let us see how can we represent a forward bias diode in a circuit. Okay, there are multiple methods by which we can represent the forward bias condition of a diode in a circuit. The first method is exponential model. Please note that this model depicts the actual practical condition of diode in a circuit. I hope you can remember that we studied this equation in the previous lecture. This equation represents ID, the forward current of the diode. This equation also represents VD, which is the voltage drop across the diode. VT was the thermal voltage and IS was the reverse current or the leakage current. We clearly saw that in this equation the forward current of the diode and the voltage drop across the diode are exponentially related to each other. Here is the exponential term. I think I explained it in the last lecture. This model depicts or represents 100% or almost 99% true behavior of the practical diode. In fact, it is the most accurate model. But we should try to see that this equation represents the condition of the diode during forward biasing. Okay, fine. In reverse biasing, we will be considering the diode to be off and not carrying any current. Okay, for forward biasing, this method is the most accurate method or the most accurate model because it is depicting the true behavior, practical behavior of the diode. However, this method is most difficult to use. This is because you are using an equation having exponential term, and of course this equation seems a bit complex when you try to find out the values of VD and ID. So whenever you try to solve the diode circuit using this method, it is time consuming. This method especially becomes difficult when there are more than one diode present in the circuit. What happens is, when you have more than one diode, you will be having multiple such equations to solve, and of course that can easily be understood that the
solution of that circuit will be quite difficult. So although this method is one of the most accurate model, but this method is seldom used. This is because previous engineers, previous researchers tried to solve the diode based circuits rapidly. They tried to observe the behavior of diode in the circuit through quick analysis, through rapid analysis, and with this rapid analysis they tried to mimic the behavior of the actual diode more and more closely. So the first method that I have mentioned over here, which is the exponential model, okay, this is the most accurate model because it is actually handling and representing the practical conditions of the diode, fine, but because of its complexity it is not used. So what, okay, now for quick analysis, for rapid analysis, the researchers have presented three different models for quick analysis. The number one model is the battery plus resistor model, the second model is the ideal diode model, and the third one represents the constant voltage drop model. We will not be studying the battery plus resistor model in much detail. However, I would be giving an introduction to this model only. In battery plus resistor model, if we observe through the value of voltages that the diode seems to be forward biased in the circuit, then we replace the diode with a battery having some drop and a resistor, small internal resistance of the diode. All these three things replace the diode in the circuit if we observe that the circuit connections are actually turning on the diode. I am not going to go into further detail of this method as we will be studying these two methods in detail for the solution of diode based circuits. We will be starting with the ideal diode model first. Let us see it. First of all, as I discussed in the last lecture, the ideal diode model, the ideal name clearly indicates that such a diode is not really possible. This is something hypothetical. Of course, this diode model will be trying to mimic or portray the behavior of actual diode. However, the properties which will be shown in this model will not be available in reality. This is actually an ideal diode model because ideal things are not available in reality. This means that this model is actually a hypothetical model but close in behavior to the actual diode. In this model, we can represent the diode as a forward biased diode and as a reverse biased diode. Okay, let us consider the example of this circuit. In this circuit, if you try to observe, there is a battery connected. The negative terminal of the battery is connected to the negative terminal of the diode. The positive terminal of the battery is connected to the positive terminal of the diode, and a resistor has been placed in series with these two so as to limit the current that is flowing through the circuit. So if I try to observe that this diode must be in forward bias condition because of the connections and the value of the supply voltage, then I must expect that this diode is forward biased. Now important to note is, for practical diode we studied that the value of this supply voltage should be greater than 0.7 volt for silicon diode and should be greater than 0.3 volts for a silicon diode. Okay, here when we say that the diode is ideal, then what we do, we say that
application of even the smallest positive voltage can turn the ideal diode on. This means that I need not to wait for the application of 0.7 volt or 0.3 volt for the silicon and germanium diodes. This supply voltage can be 1 millivolt, this supply voltage can be 0.5 volt, this supply can be greater than 0.71 volt. Any positive voltage will be able to turn this diode on if the connections are done like this, as they represent a forward bias connection. So when we see that we are following the ideal diode model, number one thing that we note is the battery should have any positive value greater than 0, right? And if I now see that the circuit connections are such that my diode is on, then we represent the ideal diode model with just a short circuit, just a straight line. So what we do is, whenever we see that a diode is forward biased and we are considering the ideal diode model, we replace the diode with a simple straight line, a short circuit showing no voltage drop or a short circuit showing 0 voltage drop. See, this is just a straight line, there is nothing. Now the second point that we know is a forward biased diode should be replaced with a 0 volt drop or a short circuit as is shown over here. Okay, this is the same thing which is written over here. Now let us see the graph of the ideal diode. Please note that IF represents the current of the diode, VR and VF represents the forward bias voltage of the diode and the reverse bias voltage of the diode. Please try to observe that right now I am not talking about this part. Why? Because right now the voltage which I have applied is not the reverse bias, it is actually the forward bias voltage. I am talking about this region, right? I am applying a forward voltage or a voltage which will be forward biasing the diode. Now you see and try to observe. When I said that I will be replacing the diode with a short circuit, it simply means that the diode doesn't have any voltage drop and it will be conducting any amount of current. This graph is depicting the same thing. It shows that when a diode will be forward biased, the voltage drop across the diode will be 0 volt and it will be having multiple values of current. It can have different current values but the voltage drop is 0. यानी कि मेरे पास 0 पे करंट की एक लाइन है कि करंट की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है. The voltage drop across the diode will be 0. So this is how we model the forward characteristics of an ideal diode. We will be solving problems with this method, so don't worry if you do not totally get this. When we will be solving the numericals, you will be 100%, you will become 100% familiar with this method. In the second case, we will be discussing the reverse bias mode of the ideal diode. Now you can see the connections have been reversed over here. The positive terminal is connected to the negative terminal of the diode. The negative terminal of the supply is connected to the positive terminal of the diode. As a result, we should definitely expect that the diode will be off. Again, a resistor has been placed in series so that it can limit the amount of current which may flow through the circuit. So, ideal diode. If I am considering this diode to be an ideal diode, then what I will be doing, if I see that this diode is reverse biased in the circuit, I will simply be replacing it with an open circuit, indicating that when a diode becomes reverse biased, it does not allow any current to flow through it and it acts as an open circuit switch. This is how we represent the behavior of the diode. Okay, important to note is when a diode is reverse biased, this I am explaining this point. When a diode is reverse biased and it is behaving as an open circuit, then
whatever be the value of the supply voltage, that voltage appears across the diode. दोबारा से बता रही हूँ, अगर कोई डायोड रिवर्स बाइज होता है तो आप उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे और उस वक्त जितना भी सप्लाई वोल्टेज आपने नेगेटिव वाला डायोड के ऊपर दिया है वो पूरा नेगेटिव वोल्टेज डायोड के अक्रॉस अपीयर हो रहा होगा. अगर मैं यहाँ मल्टीमीटर लगाकर इन दोनों टर्मिनल्स पर देखूंगी तो करंट तो ज़ीरो मेजर हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज मेजर हो रहा होगा वो वही सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू होगी. Based on this discussion, now let us see this graph where now this part is not included in the detail of the reverse bias. For reverse biasing, I am discussing only this line. You see that this line shows that when any reverse voltage is applied, this line shows the reverse voltage. When any reverse voltage is applied, the total reverse voltage is appearing across the diode. यानी कि मैंने -1 दिया तो डायोड पे भी -1 आ रहा है, -2 दिया डायोड पे -2 आ रहा है, -3 दिया डायोड पे -3, -4, -5 एंड सो ऑन, और करंट 0 का 0 रहा. तो ये जो ग्राफ है, दिस represents the behavior of the ideal diode during reverse biasing. And it is also important to note that the reverse bias characteristics of the ideal diode model, of the exponential model that we usually do not use, of the battery plus resistor model, and of the constant voltage drop model. In all the models that I have mentioned in the previous slides, the reverse bias representation of the diode remains the same, means that we replace the diode with an open circuit whenever we find the diode off or reverse biased. In all the models, the diode will be modeled as an open circuit during reverse biasing. This is what I want to say. Okay, one thing which I should mention in the previous slide is that in the previous slide the diode was forward biased. I am not going back to the slide. In the previous circuit this diode was forward biased because of the connections. So I told you that I can apply a voltage even greater than 0. That voltage can either be 1 millivolt, 2 millivolt, 3 millivolt, 0.5 volt. It can even be 50 volt, just for example. So do you really think that the diode can sustain 50 volt supply? How will it manage it without getting burnt? So now you should know that whenever we present a resistor in series with the diode, this resistor lets only either the 0 volt or the 0.7 volt to be dropped across the diode, and rest of the voltage, additional voltage, goes to be dropped across the resistor only. I'm talking about the reverse, I'm talking about the forward bias model. Now let us quickly move to the constant voltage drop model. In constant voltage drop model, as the name suggests, what do we do? Please try to observe, this is the same circuit of the forward bias region, right? In ideal diode we saw the same circuit, negative terminal of the supply connected to negative terminal of the diode, positive terminal of the supply connected to positive terminal of the diode. A resistor is present in series to limit the current. Okay, whenever we use the constant voltage drop model and when we observe that the diode seems to be forward biased in the circuit, then we always replace the diode with a battery having a constant voltage drop of 0.7 volt. In case of in case of constant voltage drop model, important thing is this: all voltages, all positive voltages are not able to turn on the constant voltage drop diode model. This means that अगर मैं constant voltage drop की मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी कि हर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर मेरा डायोड ऑन नहीं होगा, जैसे कि आइडियल में हो रहा था कि 0 से कोई भी बड़ा वोल्टेज दे दिया
The case here will not be same. यहाँ पर चूंकि मैं constant, since I am considering the constant voltage drop model, the applied positive voltage should be equal to or greater than 0.7 volt if it is a silicon diode, or the applied voltage should be greater than or equal to 0.3 volt if the diode is germanium diode and we are solving it with the constant voltage drop model. So suppose I am applying 9 volts over here, so I expect that this resistor will help to limit the amount of current through the circuit. Since it is a constant voltage drop model, it clearly means that this diode will either have a voltage drop of 0.7 if it is silicon or 0.3 if it is germanium. So applied voltage was suppose 9 volt, drop across the diode will remain constant at 0.7 volt. Now this means that out of the 9 volt supply, 0.7 volt has been consumed across the diode. Where is the rest of the voltage going? Where is the rest of the voltage getting dropped? The rest of the 8.3 volts voltage are getting dropped across the resistor. This is how we try to protect the diode in the circuit, that any positive supply can be placed over here. If we are solving with the constant voltage drop model, the diode will only consume 0.7 volt for silicon and the rest of the voltage will go easily across the resistor. We will not be doing दिस के रजिस्टर को हम खुद से वोल्टेज दें अलग से, ये खुद से सर्किट खुद ब खुद मैनेज कर रहा होगा, ये हमें इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत सर्किट को नहीं होती. ओके, how do we represent this forward characteristic of the constant voltage drop model on graph? Again, please look at this graph. This is the voltage drop axis, this is the forward voltage drop, this is the reverse voltage drop. I am right now only talking about this part of the graph. It says that when you will be applying a voltage smaller than 0.7, the current will be 0. From 0 to around 0.6 volt, the current will remain 0. However, when 0.7 volt supply is applied, the drop across the diode becomes constant at 0.7 volt and the diode can have value of any current. Again, Vf applied or the voltage drop across the diode, it causes the diode to carry a zero current when the voltage is before 0.7, and after 0.7 the voltage of the the current of the diode can have any value. Now let us go to the reverse bias model of the constant voltage drop process. Okay, now we will study the reverse bias condition of the constant voltage drop model. This circuit is the same as we studied for the ideal diode. The positive terminal of supply is connected to negative terminal of the diode. The negative terminal of the supply is connected to positive terminal of the diode, and a resistor is placed in series as usual. This connection clearly indicates that the diode will be reverse biased and therefore it is replaced with an open circuit. And as I mentioned earlier, for all of the models, when we find the diode reverse biased, we always replace it with an open circuit. So same is the case over here, and the same thing has been plotted over here, that whenever I am applying any negative voltage across the diode, this negative voltage is appearing totally across the diode, similar to the previous case. जो negative voltage दे रही हूँ वो diode पे appear होता जा रहा है, -1, -2, -3, -4, -5, और still in this case the current through the diode is 0. So here we are done with the reverse bias study of the constant voltage drop model as well. Let us proceed to the next slide.
Okay, from now on we will be solving few circuits of the diode, and for this purpose the instructions are already given that we should consider the diode to be ideal, and on this basis we should try to find the value of current I and voltage V, where we can see that I is the current through the diode and V is this voltage. Okay, I forgot to mention the value of this resistor. This value is 2 kilo ohms. One thing to note is there is no current going in this branch. इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है. इसकी वजह क्या है कि भाई ये ब्रांच आगे जाके कहाँ जा रही है? डू यू थिंक एनी अदर पाथ अवेलेबल फॉर द करंट टू गो? नो. इट मीन्स दैट दिस इज अ सिंपल सीरीज सर्किट वेयर द करंट इज गोइंग फ्रॉम 5 वोल्ट टू 0 वोल्ट. करंट 5 से 0 की जानब आ रहा है. सिर्फ इस पॉइंट का वोल्टेज, सिर्फ मैं यहाँ पे भी V लिख सकती थी डायरेक्ट. इस पॉइंट का वोल्टेज देखने के लिए सिर्फ एक लाइन लंबी सी बना के यहाँ V लिख दिया गया है. दिस ब्रांच इज नॉट कैरिंग एनी करंट. ओके, तो मुझे पता क्या चला? दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द करंट थ्रू द डायोड. अब मैं लॉजिक और देख लूँ कि दिस इज अ सिंपल सीरीज सर्किट. इफ somehow I manage to find the current across this resistor, then that current will be equivalent to the current flowing through the diode, because this is a simple series circuit. So what I see is, without involving any complex equation for the diode, I will be able to calculate the current very easily. दोबारा से बता रही हूँ, they are asking for the current across the diode, but since I note that this is a series circuit, if I somehow find the current of this resistor, the current of this resistor and the current of this diode will be equivalent since they are in series. So what I will be doing, I will be finding the current of this resistor. Let's see how. Let us now try to see whether this diode is on or off. Please try to see the positive terminal of the battery is facing a higher voltage. The negative terminal of the diode is facing a lower voltage. I think I said battery. Positive terminal of diode is facing positive supply. Negative terminal of diode is facing a low voltage. This means that this diode must be on. Now you see, since I feel that the diode is on, I should replace it with a short circuit because I am following the ideal diode model. This is what I have done in the figure. I replace the diode with a short circuit. Now you see, this is the supply, and because of the short circuiting of the diode, there is no component in between. It is just like a simple straight line. Can I say that this 5 volt supply will of course be appearing over this voltage terminal V? Yes, of course it should be. So since there is no component in between, this 5 volts must be appearing over this terminal. I have written the value of V will be 5 volt. Now if I know the value of this V, can I apply Ohm's law over this resistor to find the value of current through the resistor? Yes, I should apply Ohm's law from higher voltage to the lower voltage, and in the direction of the current which is given. The direction of the current was given from top to bottom. So I would say V minus 0. This is the Ohm's law equation. The voltages across both terminals of the diode divided by the value of the resistor R will give me the current I. The value of V is 5 volt. Minus 0 will be 5, and the resistor value is 2 kilo ohm. This is the value of the current that I find to be 2.5 milliampere. Since this resistor is in series with the diode, it simply means that the current through the diode is also 2.5 milliampere. Direct calculation. Let us now proceed to question number 2. Similar question with the direction of the diode reversed. Again they are telling us to consider the diode ideal and find the value of the current I and the voltage V. See this diode. Again I can use the same logic that there is no current going in this branch. So this diode and this resistor are in series. Finding the current of this resistor will give me the current of the diode. Now let us see if this diode is on or off.
Okay, please also note this circuit is part of the solution. It is not the part of the question. You will have to draw this part. Okay, now you see the negative terminal of the diode is at a higher voltage. The positive terminal of the diode is at a lower voltage, which is 0. This means that the diode is reverse biased. So I have written the diode is reverse biased, and therefore whenever the diode is reverse biased, automatically we know one thing is that the current through the diode will be 0. So what I did is, since the diode is reverse biased, I replaced the diode with an open circuit. Open circuit means having no current, and I then drew rest of the circuit. Whenever any diode gets reverse biased, it is understood that the current through the diode is 0. So I directly wrote circuit connections indicate that the current through the diode is 0 as it is off. Now I apply Ohm's law. I will be applying Ohm's law in the direction of the current which is given. So I would say V minus 0 divided by 2 kilo ohm should be equal to this current. This is what I have done. V minus 0 over 2 kilo ohm should be equal to this current, and I already know this current to be 0, so I placed 0 in place of I. Now V will be equal to 2k into 0. The value of voltage will be 0 volt. So in this circuit, the current of the diode is also 0, and the voltage here at this terminal is also 0. Important to note is one thing, that a current 0 anywhere, not for this circuit, a current 0 in any circuit does not mean that the voltage will be 0. Voltage can have any value. Similarly, a voltage 0 in any circuit does not mean that the current will be 0. इत्तेफाक से इस सर्किट का करंट और वोल्टेज आ गए हैं दोनों ज़ीरो, लेकिन करंट का ज़ीरो होना इसकी गारंटी नहीं है कि उस सर्किट का वोल्टेज ज़ीरो होगा, और वोल्टेज का ज़ीरो होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उस सर्किट का करंट ज़ीरो होगा. इत्तेफाकन बाई चांस ये सेम आ गए हैं. आगे देखते हैं ऐसा नहीं होगा. Let us see question number 3. Again, we are considering the diode ideal. We have to find the current and voltage. Look at the diode. The negative terminal of the diode is connected to a small voltage which is minus 5. The positive terminal of the diode is connected to a high voltage which is 0. Yes, correct. पॉजिटिव टर्मिनल पे 0 वोल्टेज है और नेगेटिव पे 0 से भी कम माइनस 5 वोल्टेज है, तो ये डायोड ऑन होगा. सिंस ये डायोड ऑन होगा, देयरफॉर आई हैव रिप्लेस्ड द डायोड विद अ शॉर्ट सर्किट. नाउ चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा, शॉर्ट सर्किट का मतलब है सब कुछ ख़त्म, बस एक स्ट्रेट करंट की वायर जा रही है, तो आई कैन ईजिली से कि यही माइनस 5 वोल्ट इस V के ऊपर अपीयर हो रहा होगा. दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटर्न कि V की वैल्यू माइनस 5. और ये कैसे पता चल रहा है कि सर्किट से नज़र आ रहा है कि डायोड फॉरवर्ड वाइज है. इसके नेगेटिव टर्मिनल पे लो वोल्टेज है माइनस 5, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे हाई वोल्टेज है 0. ऑफ कोर्स ये ऑन होगा. अब जब मेरे पास V की वैल्यू आ गई तो 12 से इस पर ओम्स लॉ लगा लूँ. V माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम इस करंट के बराबर होगा. यही लिखा है मैंने, V माइनस 0 अपॉन 2 किलो ओम इस करंट I के बराबर है. V की आप वैल्यू पुट कर दें माइनस 5 अपॉन 2 किलो ओम. I की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 2.5 मिली एम्पेयर. एक बात मैं ये बता दूं कि डायोड के थ्रू जो करंट रियलिटी में गुजरता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में गुजर सकता है. ये जो लिखा हुआ है ये इसमें नहीं गुजर सकता. डायोड के थ्रू अगर पॉजिटिव करंट गुजरेगा तो हमेशा इस डायरेक्शन में गुजरेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव. अगर इस डायरेक्शन में करंट गुजरेगा तो यकीनन उसकी वैल्यू फिर नेगेटिव आनी चाहिए. ऐसा ही हो रहा है. अगर डायोड के थ्रू मैं इस डायरेक्शन में गुजारता हुआ करंट दिखा रही हूँ तो वो माइनस में आना चाहिए. ठीक है, अगर डायोड के थ्रू इस डायरेक्शन में करंट है तो वो हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए. ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है. ये भी क्या हो रहा है ये आगे एक दो न्यूमेरिकल्स में कंफर्म हो जाएगा. ओके, now we have to consider the diode to be ideal again, and we have to find its current and voltage.
let us see that on the positive terminal of the diode there is a high value 5 volt. On the negative terminal of the voltage diode there is a low supply voltage. It means that we should expect that the diode is on or forward biased. Therefore I replace the diode with a short circuit like this. Now also I have to find the current I flowing through the diode. If you try to observe this voltage V, can I now say that this V and this ground, between this V and ground there is no component in between, so I should say that this 0 volt is actually appearing over here, V. Based on this I wrote that V is equal to 0 volt. Okay, fine. Now I can apply Ohm's law over this resistor, and I always apply Ohm's law depending on the given direction of current. It says that the current is going from here to here, like means from top to bottom. That is why I wrote 5 minus V divided by the value of resistor will give me the value of the current. 5 minus V, instead of V I have written 0 divided by 2 kilo ohm. So I is equal to 2.5 milliampere. This is our value. Let us come to question number 5. Again we have to consider the diode to be ideal. We have to find the current I and voltage V. Note that negative terminal of the diode is connected to a high voltage. Positive terminal of the diode is connected to a low voltage, which is 0. Diode must be off. So if the diode is off, I should replace the diode with open circuit. And if I will do so, similar to the previous reverse bias numerical, whenever any diode is open circuit, automatically its current becomes 0. That's what I have written. I forgot to actually draw the diagram for this. You simply have to redraw the circuit, replacing this diode with an open circuit. So since it is off, its current would be 0. Again I want to apply Ohm's law between this 5 volt and this V to find the value of the current I. I apply the Ohm's law, 5 minus V divided by 2 kilo ohm. 5 minus V divided by 2 kilo ohm. Now as I know that since the diode is off, this current I would be 0. Here is the case, I is 0 since the diode is off, but now the value of the V is 5 volt. You see? Now I told you one thing, that it is not necessary that if the current is 0 the voltage will always be 0. No, here we have actual scenario that current is 0 but the value of the supply voltage is but the value of the voltage is 5. So current 0 does not guarantee that the voltage will also be 0. This is the same thing I have written over here. Now let us quickly jump to the next circuit. This is a bit complex circuit, I would say. Let us see that. Considering the diode to be ideal, find the value of the current I and voltage V. Let us see this. There is a diode over here which is a D1 diode. A diode is over here which is D2 diode. First of all, try to see whether D1 seems to be on or off and whether D2 seems to be on or off. See that on the positive terminal of D1 there is 0 volt high voltage. On the negative terminal of D1 there is minus 10, a smaller voltage even than 0, minus 10 hai. So I expect D1 to be on. In the same manner, D2 के positive पर there is 10 volt, D2 के negative पे there is minus 10 volt. Okay, D2 also seems to be on. So what I have written, that the circuit indicates that both D1 and D2 are forward biased. Fine, since they are forward biased, I am now replacing D1 and D2 with a short circuit. I replace D1 with a short circuit, I replace D2 with a short circuit. In this circuit, we have to find the value of the current I. Please remember, in any circuit, if you want to find the value of the given current, and for this purpose, suppose you need to apply KCL at any terminal during the calculation, then you must label that terminal something,
एंड देन रेफर टू दैट टर्मिनल इन योर कैलकुलेशन। यानी कि अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ, उन्होंने तो मुझसे करंट आई और वोल्टेज वी मांगा था, लेकिन मुझे सपोज पता चला कि भाई मुझे इस पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैं, और यहाँ का कोई नाम नहीं था, यहाँ तो चलने वी दिया हुआ है, तो मैं इस पॉइंट का कोई नाम दूंगी कि भाई ये पॉइंट ए है या बी है, और मैं इस पॉइंट पे केसीएल अप्लाई कर रही हूँ, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके दैट विच पॉइंट आई एम रेफरिंग टू। अच्छा, इसी के अलावा अगर मुझसे ये करंट मांगा गया है, बट नाउ ड्यूरिंग द कैलकुलेशन आई फील दैट आई विल बी नीडिंग द करंट ऑफ दिस ब्रांच एंड आई विल बी नीडिंग द करंट ऑफ दिस ब्रांच, so what I did, I supposed two currents, I1 for this branch, I2 for this branch. I forgot to mention, but you should write in your calculation that two additional currents have been assumed, I1 and I2, and they are shown in the circuit diagram. ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने दो करंट खुद से चूज़ किए हैं, I1 I2, और आपने उनको सर्किट डायग्राम में बता दिया। अगर आपने लिखा अपनी कैलकुलेशन में कि आप I1 I2 को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे सर्किट डायग्राम में कहीं I1 I2 नज़र नहीं आ रहा, आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव अ ज़ीरो, बिकॉज आई डोंट नो विच करंट यू आर टॉकिंग अबाउट। whenever you select any current or a voltage, label it on the circuit. Okay, so now I see that D1 is short circuit, D2 is short circuit. Now you see this is 0 volt, this 0 volt will appear on this terminal, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई component नहीं है, तो यहाँ पे 0 volt appear हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक भी कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पहुँच गए कोई कंपोनेंट नहीं है, यानी कि इन अदर वर्ड्स यहाँ से जो 0 वोल्ट चलता हुआ आ रहा है, 0 वोल्ट चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ 0 वोल्ट यहाँ आ गया। इससे पता चला कि V की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, तो मैंने कहा ओके V की वैल्यू 0 है। मैंने कहा कि सर्किट इंडिकेट कर रहा है कि सब फॉरवर्ड वाइज है, V की वैल्यू निकल रही है 0 फ्रॉम द सर्किट। अच्छा, अब मुझे I फाइंड करना रहता है। अब आप ये देखें कि ये जो I है, I एक्चुअली इज़ द करंट अक्रॉस दिस डायोड। मुझे डायोड की तो कोई करंट इक्वेशन आती नहीं है, वरना तो वही मुझे कॉम्प्लेक्स वाली यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों ना ऐसा करूं कि इसके करंट को इस्तेमाल कर लूं, इसके करंट को इस्तेमाल कर लूं और केसीएल लगा दूं इस वाले नोड पे, ताकि ये करंट I निकल जाए। मुझे ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, तो ये तीसरा करंट मुझे पता चल जाएगा। सो व्हाट आई डू नाउ, ओके, नाउ लेट अस सी दैट कि I1 करंट मुझे फाइंड करना है। फॉर दिस आई कैन यूज़ द ओम्स लॉ। मुझे ये V वोल्टेज की वैल्यू पता है 0 है, यहाँ सप्लाई वोल्टेज 10 है, I1 करंट का डायरेक्शन ये है, तो मैंने कहा 10 माइनस V डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम इज इक्वल टू दिस करंट I1। यही मैंने लिखा है 10 माइनस V अपॉन 5 किलो ओम। V की वैल्यू 0 पुट कर दी, 5 किलो ओम किया, I1 की वैल्यू आ गई 2 मिली एम्पेयर। Similarly, I will be applying a KCL I will be applying Ohm's law for I2 as well। देखिए, मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो 0 वोल्ट है यहाँ पे आ रहा है 0। अब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगी तो दिस वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम इस I2 के बराबर होगा। क्या किया मैंने, ये वोल्टेज था 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम इज इक्वल टू I2। दोबारा बता रही हूँ, देखें यहाँ का वोल्टेज 0 है, 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम इज इक्वल टू I2। ये आ गया आपके पास। अब जब मेरे पास I1 भी आ गया, मेरे पास I2 भी आ गया, आई विल बी अप्लाइंग KCL एट नोड अबव 10K। इट इज़ ऑफ कोर्स माई मिस्टेक कि मुझे यहाँ 10K अबव 10K लिखने के बजाय इस नोड को ABCD XYZ कोई नाम दे देती और कहती अप्लाइंग KCL एट नोड X। बहरहाल, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट I1 करंट यहाँ से आ रहा है, सॉरी दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट I यहाँ से आ रहा है, करंट I1 यूँ आ रहा है टूवर्ड द नोड। तो देखिए I का डायरेक्शन और I1 का डायरेक्शन टूवर्ड द नोड है। इन दोनों को मैंने यहाँ KCL लगाते हुए एक साइन दिया है। I2 का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नोड है, I2 इस नोड से अवे जा रहा है, तो मैंने I2 को दूसरी साइड पर रखा है। I मुझे निकालना था, I2 I1 की वैल्यू पुट की और I की वैल्यू आ गई -1 मिली एम्पेयर। प्लीज़ नोट कि इस वक्त सिंस आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग्स ऑन द स्लाइड, अगर मैं बैक स्लाइड पे वापस जाऊंगी देन वो पूरी की पूरी मेरी स्लाइड को री रिकॉर्ड कर देगा।
बहरहाल आप अपने पास चेक कर सकते हैं कि ये जो डायोड D1 है इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर था, नेगेटिव टर्मिनल नीचे था, तो इसके थ्रू करंट I जो मांगा गया था वो यूं फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि डायोड का करंट जो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से उसके नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो हो, यहाँ से यहाँ, उसकी वैल्यू हमेशा आनी चाहिए पॉजिटिव। ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, जिसका मतलब क्या है कि कुछ गड़बड़ है। नॉर्मल असम्पशन से कैलकुलेट किया और डायोड के थ्रू गुजरने वाला करंट, उसके पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला करंट अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी असम्पशन गलत है, ठीक है। इस वजह से अब हमें इस पूरे सर्किट को रीकैलकुलेट करना होगा। अगर सपोज ये करंट यहाँ पे -1 मिली एम्पियर नहीं बल्कि +1 मिली एम्पियर आ जाता तो ये न्यूमेरिकल यहीं ख़त्म हो जाता। Why I am proceeding this numerical further is because D1 का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, D1 का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है। पॉजिटिव से नेगेटिव आने वाला करंट पॉजिटिव आना चाहिए था, ये नेगेटिव आ गया। इट इंडिकेट्स कि ये डायोड रिवर्स बाइज है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल बी रीसॉल्विंग द सर्किट कंसीडरिंग डायोड D1 टू बी रिवर्स बाइज्ड। D2 का जो करंट मैंने अपनी अजम्पशन से फाइंड किया है, D2 का भी पॉजिटिव ऊपर था नेगेटिव नीचे, उसका करंट I1 जो मैंने फाइंड किया वो पॉजिटिव आया मेरी अजम्पशन से। इसका मतलब ये हुआ कि D2 तो ऑन है, D2 का करंट I1 पॉजिटिव आया मेरे पास, लेकिन I करंट जो D1 का था वो मेरे पास नेगेटिव आया। इसका मतलब है D1 तो ऑफ है, सिर्फ D2 ऑन है। आई हैव टू रीड्रॉ द सर्किट। लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये चीज़ आप देख रहे हैं कि दोबारा से रिपीट हो गई है, ये कैलकुलेशन पिछले पेज पर भी, सिंपली डिस्कार्ड इट। अच्छा, नेगेटिव करंट का मतलब ये है कि डायोड ऑफ है, हमारी असम्पशन रॉन्ग थी। तो अब मैंने रीड्रॉ किया सर्किट को, जिसमें मैंने D1 को ऑफ दिखाया, D2 को ऑन दिखाया। जब मैंने D1 को ऑन दिखा रही हूँ तो क्या होगा, I करंट तो D1 के थ्रू गुजर रहा था, इसका मतलब है अब I करंट जो है वो ज़ीरो हो गया है डायरेक्ट। जब डायोड ऑफ नज़र आया तो इसके गुजरने वाला करंट डायरेक्टली ज़ीरो लिखा मैंने, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो करंट I1 है और ये जो करंट I1 है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, अब I1 और I2 करंट्स को बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये वाली ब्रांच में तो कुछ करंट है ही नहीं। अब तो एक सीरीज़ ब्रांच बन गई जो कि 10 से यहाँ 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 करंट फ्लो होते हुए आ रहा है। अब मैं कह सकती हूँ कि I1 करंट और I2 करंट बराबर होंगे, यही मैंने लिखा है कि अब I1 और I2 करंट बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि I करंट इस ब्रांच का करंट ज़ीरो हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए कि मुझे चाहे मैं I1 फाइंड कर लूँ और मैं I2 फाइंड कर लूँ, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप नोट करें तो देखें ये जो वोल्टेज है, ये जो लाइन बनाई है, इसमें कोई करंट नहीं है, आगे कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा, इसमें कोई करंट नहीं। एक सिंपल सीरीज सर्किट है, 10 5 वोल्ट D2 सर्किट, 10 किलो ओम का सर्किट इज इक्वल टू -10। KVL पढ़ा होगा आपने, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो मैं यहाँ अप्लाई करूँगी, वोल्टेज के टर्म में सारी चीज़ें लिखूँगी। वो क्या, ठीक है, या तो मैं KVL अप्लाई कर लूँ, अदर मेथड इज ओम्स लॉ। अब ये एक सिंपल सीरीज सर्किट है जिसमें करंट यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो कर रहा है, 10 वोल्ट से करंट फ्लो कर रहा है यहाँ। तो मैं क्या करती हूँ, ओम्स लॉ लगाती हूँ, 10 माइनस -10, ये लगाया ओम्स लॉ, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ बोथ दीज रेजिस्टेंस, 5 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम। तो मुझे जो करंट मिलेगा वो I1 भी होगा, वो I2 भी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, नाउ I1 एंड I2 आर द सेम करंट्स। ये मेरे करंट का रास्ता है जो कि सीरीज नज़र आ रहा है, तो मैंने ओम्स लॉ लगा लिया, 10 माइनस -10 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ दीज रेजिस्टेंस। मेरे पास I1 I2 करंट आ गया 1.33 मिली एम्पियर। वोल्टेज V फाइंड करने के दो तरीके हो सकते हैं। क्या मैं ओम्स लॉ लगाऊं, 10 माइनस V डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, ये क्या आ गया मेरे पास, 10 माइनस V डिवाइड बाय 5 किलो ओम इज इक्वल टू I1, 10 माइनस V ओवर 5 किलो ओम इज इक्वल टू I1। V मुझे चाहिए, I1 मुझे पता है, सारी वैल्यूज़ करूँ तो V की वैल्यू 3.33 वोल्ट निकल आ रही है।
या दूसरा तरीका मैं क्या कर सकती हूँ, देखें ये V D2 जो है वो शॉर्ट है, तो बेसिकली ये V वोल्टेज ही यहाँ पे अपियर हो रहा है। V वोल्टेज ये वाला हकीकतन ये टर्मिनल भी इस वक्त V वोल्टेज पे है, इस वजह से कि V से लेके यहाँ तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि D2 एक शॉर्ट सर्किट से आपने रिप्लेस किया है। यहाँ टर्मिनल जो है ये भी V है। मैं ऐसा कर लूँ कि ओम्स लॉ यहाँ लगा दूँ, V माइनस 10 डिवाइड बाय 10 किलो ओम इज इक्वल टू I2। यही मैंने किया है, V माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम इज इक्वल टू I2 लिखूँ या I1 एक ही बात है। इसमें से मैंने वॉल्व करके वैल्यू पुट करके V की वैल्यू निकाली, तो V 3.3 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 3.3 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इट्स द सेम थिंग। अब चूंकि सारे करंट्स भी पॉजिटिव आए, वोल्टेजेस भी सही आ गए, तो अब ये सवाल ख़त्म हो गया है। अदरवाइज अगर D1 का जो करंट मैंने I पहले निकाला था वही पॉजिटिव आ गया होता तो डायरेक्टली वही आंसर हो गया होता, न्यूमेरिकल वहीं ख़त्म हो जाता। इस तरह का न्यूमेरिकल जिसमें कि डायोड ऑफ है और फिर हमें जो है वो दोबारा कैलकुलेशन करनी है, बुक में एक ही है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। आगे इस टाइप का और कोई मज़ीद न्यूमेरिकल होगा नहीं कि जिसमें जब डायोड ऑफ मिला तो दोबारा से कैलकुलेशन करनी पड़ी। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द सर्किट्स with the constant voltage drop model. I am going to solve the question number 1 where I had to find I and V, but this time now I am solving using the constant voltage drop model. Same circuit as question number 1. डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे हाई वोल्टेज है, नेगेटिव टर्मिनल पे लो वोल्टेज है। ठीक है, डायोड ऑन नज़र आ रहा है। चूँकि डायोड ऑन है इस वजह से अब मैंने डायोड को एक सप्लाई वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया। ये सप्लाई वोल्टेज जो है सप्लाई नहीं हो रही होगी, बेसिकली इसमें 0.7 वोल्ट का ड्रॉप दिखाने के लिए मैंने ये 0.7 वोल्ट की सप्लाई दिखा दी है, बैटरी दिखा दी है। इसका मतलब है कि ये डायोड 0.7 वोल्ट कंज्यूम कर रहा होगा। अच्छा, अब हमें इस तरह के सर्किट्स को जिसमें कि कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल आप ले रहे हैं, हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट वोल्टेज को लोकेट कर लेना चाहिए। वो क्या, देखिए इस सर्किट का हाईएस्ट वोल्टेज क्या है 5, इस सर्किट का लोएस्ट वोल्टेज क्या है 0। इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि 5 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा, ये कोई चीज़ नहीं है। 5 वोल्ट में से वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा, थोड़ा वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा, तो आखिर में 0 बच जाएगा। इसका मतलब अब हुआ क्या कि 5 में से ये ड्रॉप सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ का वोल्टेज मुझे मिल जाएगा। वही मैंने लिखा है कि V की वैल्यू क्या है 5 माइनस 0.7 जो कि बराबर है 4.3 वोल्ट्स के बराबर। अब जब भी मेरे पास V की वैल्यू नोन हो जाती है, बिल्कुल पिछले तरीके से मैं ओम्स लॉ लगाऊंगी कि V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम इज इक्वल टू दिस करंट। यही किया है मैंने, V माइनस 0 डिवाइड बाय 2 किलो ओम आई करंट के बराबर है और इसकी वैल्यू आ रही है 2.15 मिली एम्पेयर। यही न्यूमेरिकल जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब मैंने इसको कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से सॉल्व करवाया है, तो फॉरवर्ड की कंडीशन चेंज हो गई। ऐसा ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2 में मैंने रिवर्स बाइस के साथ भी करवाया था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि रिवर्स बाइस चाहे कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप में हो और वेदर इट इज़ इन द आइडियल डायोड मॉडल, we always replace a reverse bias diode with an open circuit. Therefore, I haven't solved question number 2 again over here with the open circuit. It will be exactly same for constant voltage drop and same for ideal voltage drop model. Let us proceed to question number 8. This is I think question number 3 or question number 5. Anyways, we are asked to use the constant voltage drop model and we have to find the value of I and V. Let us see if the diode is on and off, and please note that I have asked you to use the constant voltage drop model only where I saw the diode was on. So please note that on the negative terminal there is a low voltage -5, on the positive terminal there is a high voltage 0 volt. The diode is on. Since the diode is on, again I replace the diode with a battery. अब एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि
ये जो बैटरी है डायोड के डायरेक्शन के हिसाब से बनी है। नेगेटिव टर्मिनल जहाँ पर है वहाँ मैंने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाया है, पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का जहाँ पर है वहाँ मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है। अब मुझे जिस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया कि हमने कहा यहाँ से वोल्टेज सब्ट्रैक्ट होते 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 ज़ीरो आ रहा था, यहाँ मैं ऐसा नहीं कह सकती। इसलिए नहीं कह सकती कि लेट अस ट्राई टू लोकेट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वोल्टेज इन द सर्किट। इस सर्किट का हाईएस्ट वोल्टेज क्या है? 0। इस सर्किट का लोएस्ट वोल्टेज क्या है? -5। ये सर्किट इनफैक्ट उल्टे डायरेक्शन में बना हुआ है। हाईएस्ट वोल्टेज है 0, लोएस्ट वोल्टेज है -5, यानी कि 0 वोल्ट में से 2 किलो ओम का ड्रॉप निकलेगा, इस 0.7 का ड्रॉप निकलेगा, तो आखिर में -5 वोल्ट बचेगा। इसीलिए मैं आपको बता रही थी दैट whenever you try to solve any series circuit, always try to locate the highest voltage first, because we will start writing our KVL equation or the solution starting from the highest voltage and going towards the lowest voltage। तो मैंने क्या किया, 0 से इसका ड्रॉप निकला, इसका ड्रॉप निकला, तो -5 बचा। तो मुझे पता चल रहा है वोल्टेज ड्रॉप इस डायरेक्शन में कम होता हुआ जा रहा है। तो अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि -5 में से इसका ड्रॉप निकालूं तो V बचेगा। नो, मैंने अभी पता लगाया है वोल्टेज यूं रिड्यूस कर रहा है, तो मुझे लिखना होगा V में से 0.7 का ड्रॉप निकलेगा तो -5 बचेगा। यही मैंने लिखा है कि V minus 0.7 is equal to -5. Now I can solve it. I will get the value of V to be -4.3 volt. Okay. As soon as I know this voltage, I can apply Ohm's law to find this current I. Please note that I know that the current, the highest voltage is this, the -5 voltage is this. This is the direction of the voltage drop. But they are asking us to find this current. Apply Ohm's law to find this. V minus 0 divided by 2 kilo ohm is equal to I. V minus 0 over 2 kilo ohm is equal to I, and this is the current that I have got. अब ज़रा दोबारा देखें कि ये current, this current is again a negative value. I told you earlier that the current through the diode should be positive when it is flowing from positive terminal of diode to the negative terminal of the diode. अब आप ज़रा नोट करें, diode, here is our diode, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तक जाता हुआ करंट पॉजिटिव होना चाहिए। डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की जानिब जाता हुआ करंट, इट शुड बी पॉजिटिव। अब आप देखें, आपने करंट कैलकुलेट कौन सा किया है? आपने अपोजिट करंट कैलकुलेट किया है, आई, जो डायोड से उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इस डायरेक्शन को पलट दूं, डायोड के इस डायरेक्शन को पलट दूं, तो वो करंट क्या होगा? वो करंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल सही चीज़ फाइंड किया। मैंने जो करंट फाइंड किया है वो इस डायरेक्शन में, जब भी वो नेगेटिव आ रहा है। अगर मैंने इस करंट की डायरेक्शन को पलटा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और इसकी साइन भी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे इस करंट का माइनस साइन होना, इट्स नॉट इंडिकेटिंग दैट द डायोड इज ऑफ, it is indicating that the diode is on, because I am calculating the opposite direction current. Diode's current flowing from its negative to positive terminal can be negative. Diode's current flowing through its flowing from its negative to positive terminal, this current can be negative, but diode's current flowing through positive to negative terminal should not be negative. तो ये पहली वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। This is correct current. Few more numericals related to the constant voltage drop model. I think it is increasing a lot. The time span is too much more today, but I wanted to finish all the numericals in a single slot so that we can start with a new topic in the next class. Okay, so again this is a circuit. We have to find the value of I and voltage V naught, and using the constant voltage drop. First of all, let us see the direction. This is the highest voltage
on the positive terminal of the silicon and on the negative terminal of the on the positive terminal of silicon and the positive terminal of germanium, and both negative terminal are facing the low voltage 0 volt. So we expect that the diodes are on. Therefore what I did, I replaced the silicon with a 0.7 volt supply, I replaced germanium with a 0.3 volt supply. And similar to the previous, I will try to locate the highest voltage and the lowest voltage. The highest voltage of the circuit is this 12 volt, the lowest voltage of the circuit is 0 volt. So I should think that starting from 12 volt there will be drop of 0.7 in silicon diode, there will be a drop of 0.3 in the germanium diode, there will be a drop in this resistor, and at the end 0 voltage will be left. So based on the same thing, I have tried to write that if I want to find the value of this V0, what this value will be. 12 volt में से I should subtract the drop of this, I should subtract the drop of this, I would get the voltage at this point V0. This is what I have done. V0 कैसे बताया, 12 में से 0.7 का ड्रॉप निकाला, 0.3 का ड्रॉप निकाला, V0 की वैल्यू मेरे पास आ गई 11. प्लीज़ नोट के V0 is not conducting any current, this branch is not conducting any current. सिर्फ इस पॉइंट के वोल्टेज को यहाँ लिखने के बजाय थोड़ा सा लंबी लाइन निकाल के यहाँ V0 लिख दिया, अदरवाइज मैं इसके ऊपर भी यहाँ V0 लिख देती, इट वुड हैव बीन द सेम थिंग. दोबारा बता रही हूँ, आई लोकेटेड द हाइएस्ट वोल्टेज, I located the lowest voltage, and I now know that the voltage will be decreasing in this direction. Based on this thinking, based on this intuition that I can see from here, I expect कि 12 में से इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप निकल जाए तो V0 मिलेगा, वो मुझे मिल गया. 12 minus 0.7 minus 0.3 V0 मिल गया. Now once I know this V0, I can easily find this I using Ohm's law. V0 minus 0 डिवाइड बाई 5.6 किलो ओम, वो इसके थ्रू गुजरने वाले करंट के बराबर होगा. V0 minus 0 over 5.6 kilo ohm is equal to I, and the value of I over here is 2.07 milliampere. This was a very simple numerical in fact. Similar numerical as the last one, but constant voltage drop has to be followed. I and V0 are to be calculated. The diodes both are silicon and they are now oppositely facing each other. देखें, the circuit connection indicates that this diode might be on because its positive terminal is connected to a high voltage, its negative terminal is connected to a low voltage. We expect this silicon to be on, लेकिन the condition for this silicon is reversed. Its negative terminal is connected to high voltage, positive terminal is connected to a ground. So this silicon is on, this silicon is off. Now what you see, अगर ये वाला off है तो क्या होगा, I will be replacing this with a battery and I will be replacing this with an open circuit. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि since this is an open circuit, ये और ये they both are in series, so turning off of one of the diode will automatically turn off all the other diodes present in series, no matter what forward voltage has been applied on them. दोबारा से देख लें, these two silicon diodes are available. Positive voltage, on the positive terminal a high voltage, towards the negative terminal 0 volt. पहला वाला ऑन, दूसरा वाला अपोजिट है, नेगेटिव पे ज़्यादा वोल्टेज नज़र आ रहा है, एंड ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल आई कैन सी 0 volt. This is off, should be replaced with an open circuit. This is on, should be replaced with a battery. An off diode in series with an on diode will automatically turn both of them off because series में करंट जो फ्लो करता है, अगर 20 से करंट ओपन सर्किट है तो बाकियों में कैसे करंट हो सकता है. सो ऑटोमेटिकली आई नो कि वो सीरीज़ में है, क्या होगा, करंट आई जो है वो ज़ीरो आ जाएगा.
When the current I is 0, now I can apply Ohm's law to find this V naught. V naught minus 0 over 5.6 किलो ओम इज इक्वल टू I, यही लिखा हुआ है. I की वैल्यू 0 है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 होगा एंड इट विल गिव मी 0 वोल्टेज V नॉट. ये V नॉट है, आई फॉरगॉट टू राइट V नॉट. दिस इज V नॉट जो कि 0 आ रहा है. I think this is our last numerical. No, in fact one more is after this, I recall. Please note, there is one diode. Positive terminal of diode is at a high voltage, negative terminal of the diode is at a low voltage. Okay, expected to be on, the diode is expected to be on, and this is the highest voltage in the circuit, this is the lowest voltage. The voltage is dropping in this direction. Okay, now they are saying that this is the current I. There is no current mentioned for this branch. What will be its current? तो पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे there is no current going over here. If I current is flowing over here, the same I current will be flowing over here and its direction will be from 10 volt to the V naught. ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा होगा. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चूँकि मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकती यहाँ पे, सिमिलर टू आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 कि मैं यहाँ एक डायोड था, दो डायोड था, दोनों द डायोड्स ड्रॉप्स वर नोन टू मी and I wrote the value of V naught directly. Here I cannot do so because I do not know the drop of this 4.7 kilo ohm resistor. It is a resistor. So I will have to write an equation that 10 volt में से इस resistor का drop निकालूं. I should take the drop of this silicon, I should take the drop of this resistor, and at the end I will get minus 5 volt. This is what I have tried to write over here, and this writing of equation is called as the KVL equation, applying KVL on the circuit. Now the question arises, how can I write the voltage drop of this resistor? I can write it by multiplying it with the current that is going through it. ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कहा 10 वोल्ट में से निकाला 4.7 किलो वाले का करंट, सॉरी का ड्रॉप. क्या किया मैंने, 4.7 किलो को आई मल्टीप्लाइड विद द करंट, then the drop of the silicon diode here, then the drop of the 2.2 kilo ohm. This is also calculated by multiplying it with the current I is equal to में क्या बचा, minus 5 बचा. Now in this equation only the value of I is unknown. You can easily calculate the value of I. ये आप calculate करके ज़रूर देखिएगा because some of the values are kilo ohm and some of the currents are in milliampere. So maybe you don't get the correct answer at the first instance. ये calculation practice should have been done by all of you. Okay, now in fact I would suggest all of you to simply note down this question and try to solve every question yourself, and if you don't get then please see my solution. आप खुद से करने की कोशिश करें इसे. Okay, now once the value of I is known, it is very easy to find the voltage V naught. I can apply Ohm's law. V naught minus 5 divided by 2 kilo ohm divided by 2.2 kilo ohm is equal to I. ये Ohm's law लगाया, V naught minus 5 divided by 2.2 kilo ohm is equal to I. I know the value of I is this. I can easily find the value of V naught. Let us go to the okay, now this is our last numerical. Here we have to consider the diode for the constant voltage drop model, and we have to find the value of current I1, I2 and ID2. Please note that current I1 is over here, current I2 is over here, and I forgot to mention, but it was given in the circuit that ID2 is the current flowing through here. Here I have labeled it during the solution. Okay. Now while when I started solving this circuit, I realized that I will be needing the current of this diode as well. So what I did, I assumed a current I and I also labeled it on the circuit diagram, and I wrote that, see, 12 volt supply is given to the positive terminal of this and to the positive terminal of this. It means that both of them
seem to be forward biased. I wrote the same thing, okay, both of them seem to be forward biased. And I also wrote one thing, all the assumed currents and voltages are labeled on the circuit diagram. Whatever currents and voltages I supposed, I labeled all of them in the circuit diagram. You, wherever in any of your calculation, if you are choosing any current or a voltage, don't forget to write this detail that you are labeling all the assumed currents and voltages in the circuit diagram, or फिर all of those currents and voltages must be labeled on the circuit diagram so that the examiner can see which current or voltage you are right now talking about. Okay, now let's proceed with the solution. This is slightly trickier, that they are asking to find the current of a short circuit. What I did in the next step, I drew this resistor over here. See, I drew this resistor over here. Actually this current I1 was flowing through this resistor R1. See over here. So I simply shifted this resistor over here, and now I can find I1. See how? Please note that this resistor 3.3 kilo ohm and this silicon, they are in parallel. There is no component in between over here. So can I say that whatever be the voltage drop of silicon will be the voltage drop across resistor, because they are in parallel. We already know that voltage remains same in parallel. So what I see is, if this silicon diode would be on, its voltage drop will be 0.7 volt. Therefore the voltage drop across this resistor will also be 0.7 volt. So मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि दोनों डायोड्स ऑन हैं. Therefore what I did, I wrote I1 will be equivalent to, according to Ohm's law, will be equivalent to 0.7 upon 3.3 kilo ohm is equal to 0.212 milliampere. This current I is calculated considering that 0.7 will be the drop across this diode and 0.7 will be the drop across this resistor, because voltage remains constant or same in parallel. I1 is now calculated. I is our supposed current. Okay. Please also note that you might have solved such circuits in your basic electrical analysis. Whenever a positive supply like this is connected, the current which is positive comes out actually from here, not from here, which is shown like this I2. They are asking us for a tricky current I2. Usually when we have a positive supply like this having the positive terminal on the top, the current comes out of the positive terminal rather than coming out of the negative terminal. So what I did, I actually chose this current because I have the habit of solving circuits where current comes out from the positive terminal of the supply rather than from the negative. तो मैंने क्या किया, I chose this current I, and when I will be able to calculate this current I will say that I and I2 are simply opposite to each other. Whatever will be the value of I2 will be the अपोजिट ऑफ आई, यानी कि आई की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, आई के साथ माइनस लगा दूं, I2 आ जाएगा. ठीक है. नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस करंट आई फर्स्ट. देखिए मैं इस पे लूप इक्वेशन लगाऊंगी जैसे KVL आप लगाते थे. आई शुड हैव रिटन अप्लाइंग KVL इन द सर्किट. मैंने क्या किया, 20 वोल्ट में से इसका ड्रॉप निकाला. आपका यहाँ पे अक्सर रजिस्टर वगैरह होता होगा तो आप रजिस्टर इनटू करंट मल्टीप्लाई करके उसका ड्रॉप निकालते हैं. यहाँ रजिस्टर नहीं है, यहाँ डायरेक्ट सिलिकॉन है, तो मैंने कहा 20 में से सिलिकॉन का ड्रॉप निकाला. फिर यहाँ पे भी अक्सर आपके पास रजिस्टर होता था BEE के अंदर, आप रजिस्टर में से गुजरने वाला इस लूप के करंट और इस लूप के करंट को सब्ट्रैक्ट करते थे और रजिस्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ भी रजिस्टर नहीं है, डायोड है, मुझे इसके दिस ड्रॉप इज़ ऑलरेडी नोन. तो मैंने क्या किया, 20 वोल्ट माइनस 0.7 माइनस 5.6 किलो ओम इनटू इट्स करंट, माइनस 5.6 किलो ओम इनटू इट्स करंट. मैंने यहाँ जो करंट लिया वो
I2 करंट नहीं लिया, मैंने I करंट लिया, क्योंकि अगर I करंट, इफ I करंट इज गोइंग फ्रॉम हेयर, ये ऐसे जा रहा है, तो कैन आई से दैट कि वो I करंट यूं जा रहा है, ठीक है. आई हैव ओनली रिटन I हेयर, बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट दिस I करंट वॉज लाइक दिस, यहाँ से आ रहा था यूं यूं जा रहा था, यहाँ से आ रहा था यूं यूं जा रहा था. तो 5.6 किलो ओम के अंदर से जो करंट गुजर रहा है वो क्या है, दैट इज द करंट I. Now this is a simple KVL equation. I can easily find the value of I, which will come to be 3.32 milliampere. You can solve yourself. What I said is I and I2 are opposite in nature. What I did, मैंने कहा I2 I का नेगेटिव होगा, -3.32 मेरा आंसर आ गया. फाइनली मेरे पास ये करंट I आ चुका है. फाइनली आई नो दिस करंट I1. Can anybody tell us how can we find this ID2? I can easily find this ID2 by applying a KCL at this node A. What did I did? I current is entering toward the node. I current node की तरफ जा रहा है. ID2 and I1 they both are going away from the node. तो मैंने यहाँ लिख दिया I1 और ID2 को सेम साइन के साथ. Put whatever values which are known. I की वैल्यू मुझे नोन है, I1 की वैल्यू मेरे पास नोन है. आई कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ ID2. प्लीज़ नोट कि I2 और I एक दूसरे के अपोजिट थे, जो कि मैंने यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है. एट दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट I, नॉट ID2. ओके, सो हेयर वी आर फिनिश्ड विद आवर न्यूमेरिकल्स of the ideal diode model and the constant voltage drop model. Next few lectures will be covered by Dr. Riaz, who will be recapping or guiding you relevant to the diode models further, and he will also be explaining you the topic of rectifiers. When he will be done with the diode model and rectifiers, I will then again continue with topic of wave shaping circuits called as clippers and clampers. Okay, that's all for today. If you have any query, you can write them down. We can discuss them in the live session. Thank you and Allah Hafiz.